में 1,19,906 मामले ऐसे हैं जो 10 वर्षों से लंबित हैं। वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों की संख्या 7,178 है। विभिन्न श्रेणी के लंबित मामलों का जल्दी निपटारा कैसे हो, कैसे त्वरित न्याय मिले, उस पर भी सदन को सोचना चाहिए, क्योंकि समय पर न्याय मिलना भी अन्याय है। शपथ महोदय, एक आध आपके यहाँ तो बोल दूँ, बताएं। शपथ जी, जनहित याचिकाओं के फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर सरकार एक निगरानी तंत्र बनाए। इसी सदन में बजट सत्र में सरकार ने कहा, दुर्भाग्य है कि सरकार ने यह कहा कि जनहित याचिकाओं जुड़े मामलों में अवमानना से जुड़े प्रकरणों का विवरण रखा ही नहीं जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी भी पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रयास करने चाहिए। वहीं जनहित याचिका जनता जुड़ी होती है और जनहित याचिकाओं के निर्णय की मॉनिटरिंग नहीं करने, वे अवमानना का रिकॉर्ड संदर्ज नहीं करने से जनहित याचिकाओं के निर्णय प्रभावी रूप से लागू नहीं होते। ऐसी स्थिति चिंताजनक, सरकार को इस विषय पर गंभीरता सोचने की जरूरत है और जनहित याचिकाओं के निर्णय की मॉनिटरिंग का भी निगरानी तंत्र सरकार को बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ द मिनिस्टर प्लीज। Thank you, Chairperson sir. The repealing and amending bill 2025 पर आपने चर्चा की अनुमति दी और अब तक 24 लोग बोल गए। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के हमारे डीन कुरियाकोस जी ने शुरू की और चर्चा की समाप्ति में श्री हनुमान बेनीवाल जी आरएलपी के, उन्होंने चर्चा की समाप्ति की। हनुमान जी से पहले 23 लोग बोल चुके थे। आपने अनुमति देकर के 24 लोगों को बोलने का अवसर दिया और ये संदेश दिया कि मोदी सरकार 24 घंटे काम करती है, 24/7 काम करती है और भारत को विकसित भारत बनाना है, इसलिए 24 लोग बोले किसी बिल पे तो अच्छा रहता है। ये आपने एक अच्छा संदेश दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक विषय आया कि ये कानूनों को क्यों समाप्त कर रहे हैं, कुछ जल्दी में आप लेके आ गए क्या? देखिए, 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश की जनता की कृपा से, तब से लगातार कानून बनाना, अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको रद्द करना, समाप्त करना, या कोई संशोधन करना है तो संशोधन करना, ये लगातार करती आ रही है। मैं जो हमारे कांग्रेस के साथी बोले उनको पूछना चाहता हूं कि यूपीए फर्स्ट और सेकंड में, उससे पहले कांग्रेस के शासन में भी रिपीलिंग और अमेंडिंग होता रहा, लेकिन यूपीए फर्स्ट और सेकंड के शासन में 2004 से 14 के बीच में या तो ये काम करना भूल गए या कोई और काम में लग गए, जिससे एक भी कानून रिपील और अमेंड नहीं हुआ। उससे पहले होते रहे, क्योंकि ये भी एक काम है लेजिस्लेटिव वर्क का। इसलिए भारत के यशस्वी और तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हैं। सुधारों की इसी प्रक्रिया में मई 2014 से लेकर अब तक 1577 जो ऑब्सोलीट और रिडंडेंट ऐसे कानून हो गए थे, उनको निरस्त करने का हमने काम अब तक किया है, जिसमें 1562 जो थे वो पूरी तरह से रिपील हुए, 15 कानूनों को हमने री इनेक्ट किया। और ये जो आज द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल है, उसमें हमारे 71 ऐसे कानून हैं, जिसमें 6 प्रिंसिपल एक्ट्स है और 65 अमेंडमेंट एक्ट्स है, जिसमें हम रिपीलिंग और संशोधन करने के लिए बिल लेकर के इस मान सदन के समक्ष आए हैं। सर, पिछले 11 सालों में 40,000 से अधिक हमारे कंप्लायंस बर्डन को हमने कम किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है कि हमें ईज ऑफ लिविंग की ओर भी तेजी से बढ़ना है। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हमारे काम में हमें रखनी है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हमें देना है। और जो पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से की थी, उसका भी ये एक भाग है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है,
ये हमारा प्रण होना चाहिए। हमें गुलामी के अंशों से मुक्ति पानी होगी, ये भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर गर्व करना चाहिए, ये भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। हमें एकजुट रहना चाहिए, ये भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। और हमारे कर्तव्य भाव को हमें बढ़ाना चाहिए, ये भी हमारा प्रण होना चाहिए। जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोले और उसके क्रम में ये द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल आया है, तो जल्दी नहीं है, सोच विचार करके लाया गया ये बिल है और विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ ये कदम है। आपने कहा कि एक विषय आया कि आपने ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ध्यान में नहीं रखा, या अब इसमें एक गलती से एक शब्द आ गया, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की जगह हम प्रिपरेशन जोड़ रहे हैं। तो प्रिवेंशन ऑलरेडी उस एक्ट में है, एक्ट के सेक्शन 32 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो कुरिया को शायद चले गए बात करके कि ये क्यों आप अमेंड कर रहे हैं। तो सिंपल सा अमेंडमेंट है, इसमें आपको इतना ये समझना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। क्या द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपके समय आया ये एक्ट, मैं मानता हूं, लेकिन उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अनजाने में त्रुटि ठीक करने के लिए है। ये इसमें एक प्रिवेंशन शब्द आ गया, उसकी जगह हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसका तो आपको समर्थन करना चाहिए था। अब एक विषय आया, द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में आप संशोधन क्यों कर रहे हो? डाक विभाग द्वारा डाक उत्पादों और सेवाओं को रेशनलाइजेशन तथा रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस व स्पीड पोस्ट सर्विस का मर्जर कर दिया। सर, रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस और स्पीड पोस्ट सर्विस का मर्जर कर दिया। तो उसके परिणाम स्वरूप ये संशोधन हम लेके आए हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सप्रेशन को स्पीड पोस्ट विथ रजिस्ट्रेशन से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? कोई आपत्ति का विषय ही नहीं है। एक विषय हम जो लेके आए कि द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में, ये आप भी बहुत ज्ञानी हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, आप देखिए इसमें एक सेक्शन 213 था। ये एक्ट भी 1925 का है। इसमें ये लिख दिया गया कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल सिविल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई वसीयत होगी, विल होगी, तो इसमें जो हमारे हिंदू होंगे, बौद्ध होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, ये अगर विल करेंगे तो प्रोबेट कराना पड़ेगा, जिसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और मुस्लिम करेगा तो नहीं कराना पड़ेगा। तो ये तो भेदभाव पूर्ण एक प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं। हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 15 ये कहता है कि हम जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये एक्ट 1925 में बना, इंडियन सक्सेशन एक्ट, और ये भेदभाव करता था। इसलिए भेदभाव पूर्व कोई अगर एक्ट में प्रावधान है तो वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में किताबों में नहीं रह सकता। इसलिए हम इसको हटाने के लिए आए हैं। बहुत से विषय आए सभापति जी, एक दो विषय पे बात करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। ये जो अभी ये इसमें जो प्रस्तावित बिल है जिसमें चर्चा हुई, इसमें 6 प्रिंसिपल एक्ट है और 65 अमेंडमेंट्स के बाद से संबंधित एक्ट है। ये भी एक विषय था, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं एक विषय आपके समक्ष ला रहा हूँ कि हमारे कालखंड में अब हमें लगेगा कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी नागरिकों को प्रमोट करना है। हमें ये लगेगा कि हमें नागरिकों को समान अधिकार देना है। हमें लगेगा कि नागरिकों को हमें सुविधा देनी है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और उसी से संबंधित ये एक बिल है। कोई इसमें ज़्यादा जो बिल के अलावा विषय आए हैं, अध्यक्ष महोदय आप आसन पे आ गए हैं, तो आपने पहले भी कई बार कहा है कि बिल के अलावा कोई विषय आए तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो आपके निर्देशों का पालन करते हुए जो बिल से संबंधित हैं, नहीं आपने कहा था कि बिल के अलावा कोई विषय आते हैं
अब जैसे कई विषय आ गए, अब हनुमान जी बोलते बोलते बोल गए, कई भाई वो एट्रोसिटी में भी बोल ये गए। माननीय हनुमान जी हैं, हर विषय के एक्सपर्ट हैं ये। और कई और भी लोग थे जो कई विषय पे चले गए, कोई फार्मर लॉ पे चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई जजों की। अबे हमारे कल्याण बनर्जी साहब तो बहुत विद्वान आदमी हैं, जजों की कमी है इसमें, इस बिल से इसका संबंध नहीं है ना। तो आपके जो निर्देश थे, हैं? कोई इंडिगो में यात्रा कर रहा है, तो आपके जो निर्देश है उसके अनुसार जो विषय आए उनका मैंने जवाब दे दिया है, और मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव लॉ है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में पहली और दूसरी सूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 24, सबका बीमा सबकी रक्षा, बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025। माननीय मंत्री जी कुछ रखेंगे आप विषय? शायद इंट्रोड्यूस के समय भी नहीं हो पाया था, हल्का सा बता दें ताकि सब्जेक्ट पे बोलने की व्यवस्था रहे। नहीं तो क्या है कि सब्जेक्ट के इधर उधर बोलेंगे। सो ओपनिंग स्टेटमेंट दूं? हाँ, थोड़ा ओपनिंग स्टेटमेंट दे दे। नहीं तो क्या है, ओपनिंग स्टेटमेंट इसलिए दिला रहा हूँ मैं आपसे, नहीं तो सब्जेक्ट के इधर उधर ठीक है जी। विषय जाएगा। इसलिए इस विधेयक के बारे में हल्की सी जानकारी रहे। सभी मान्य सदस्यों से भी अपेक्षा है कि वो विधेयक के आसपास ही बोले हैं। धन्यवाद जी। In the opening remarks, I would like to just highlight, sir, as to what is the current ecosystem. After all, the policy has moved towards reaching 100% FDI now. Earlier, we had amended it to reach 49%. And with these kind of that and many other changes, there is an ecosystem developed in this country with greater access for people for insurance. Insurance ombudsman rules were framed in 2017. And IRDAI was also established. They have established an elaborate framework for the protection of policyholders. Government came up with several flagship programs like PM Jeevan Jyoti Yojana, PM Suraksha Bima Yojana, PM Jan Arogya Yojana, and Krishi Bima Yojana. All these aimed at the poorest sections who can't afford insurance, but by keeping the premium less, we made access to insurance, and as I said in the morning, that kind of an access which came of help even during a big pandemic like COVID.
Other than that, the government also has been making sure that the public sector insurance companies can meet the insurance requirement of the people of India. So by listing of LIC, for instance, we have made it transparent for people to know what is happening there. And those who want to participate in the retail stock market, they can also come in. The GIC, reinsurance, New India Assurance are all in this direction. So with these kind of steps taken, as I said, we moved from 26% to 49% in 2015, from 49 to 74 in 2021. These have actually brought in greater push for the insurance sector. I'll explain how by taking some of the parameters. In 2014-15, number of insurers were 53. Now they are 74. Insurance penetration earlier was only 3.3%. Today it is closer to 3.75, 3.8. Insurance density, average insurance premium paid per person in a year is referred to when I say insurance density. It was $55 in 2014-15. Now it is $97. Total insurance premium in lakh crore rupees is 4.15 lakh crore in 2014-15. Now it's 11.93 lakh crores. Asset under management is 24.20 lakh crores in 2014-15. Now it's gone to 74.43 lakh crores. FDI limit in insurance companies, as I said, was raised from 49% in 2014-15 to 74% in 24-25. Whereas for insurance intermediaries, that 49%, which was the case in 2014-15, was made 100% even in 24-25. So with all this, now is the time when we are looking at greater penetration, and we want to have the regulator also to be more robust, and that is why we've taken this in the policy, in the amendment that we are bringing about. We're getting into the details of each one of those, but there will be a better regulatory oversight. There will be ease of compliance. Insurance intermediaries will provide uninterrupted services. And we're also treating both intermediaries and insurance companies with a lot more standardized approach, so that whenever they do anything, they will have to have a stakeholder consultation before they bring in any policy, and so on. So this bill, sir, broadly I leave it here, that it aims at bringing transparency. There is a good need for insurance money, so increase in FDI. Many compliance-related issues are being eased out. There is, for instance, a legal requirement to seek prior approval, even to appoint, approval of the IRDAI or the regulator for transfer of share capital that has been 1%, even for that they will have to come. Now we are saying, no, you come only when it is 5%, so that there will be greater flexibility and so on. So there are very many such measures, sir. Once the discussion is over, I'll take your permission and give the elaborate clarification and reply to all the members. So with this, I look forward to having the debates. ये ओपनिंग है आपकी, और अच्छा माननीय संसद सदस्य वही होता है जो बैठे बैठे टिप्पणी करने की अपेक्षा जब ओपनिंग हो, जब अच्छा खेले। थैंक यू सर। तो अच्छा बोलो सर। थैंक यू इस सर। देश के अंदर सदन से ही देश के बड़े नेता बने, हम भी चाहते हैं सब बने। नहीं तुम्हारा, थैंक यू सर। हर बात पे बोलने से नहीं बनते। थैंक यू सर। टाइम नहीं मिलता ना जी, फिर बैठे बैठे सर, this bill at 12:30 it was introduced, and 4:30 we are having a discussion
The main question is that why the government is rushing too far for this to be made. This House has debated many bills, sir, some technical, some transactional, some routine. But today's bill is none of those. This bill they'll ask for fundamental questions about our republic. Is insurance a public promise or merely a private product? Is protection a right of citizenship or a privilege of purchasing power? Because insurance is not just about policies and premiums, sir. It's about who bears risk in our society. Speaker, sir, when risk is pushed away from the state and onto citizens, democracy itself becomes fragile. Let us remember where we came from, sir. 1956, India nationalized the life insurance not because markets failed, but because markets excluded. Indira Gandhi said, the purpose of nationalization is not profit but protection. LIC was born not as corporation, but as a constitutional instrument of social security. It insured farmers with uncertain incomes, workers without formal contracts, families whose only asset was hope. And for decades, LIC did what private capital could not. Went to villages, took long-term risk, invested in national development. That's the Congress idea of insurance. Not extraction, but inclusion. Not speculation, but solidarity. What this bill really does, Speaker, sir, this bill is wrapped in comforting words, Sabka Bima, Sabki Raksha. But let us read the fine print. Section 3AA allows 100% FDI in insurance, not 74%, not shared control, but complete foreign ownership. That means pricing decisions made outside India, investment priorities set by global boards, profits repatriated abroad, and all in a sector that controls household savings, long-term capital, and a social risk pooling. This is not reform, sir. This is withdrawal of the state. The government claims that this is the necessity for capital. But, Speaker, sir, facts matter. Many private insurers have not even used the existing 74% FDI limit, sir. If capital was the real problem, why was the 74% not enough, sir? The truth is uncomfortable. This decision is not driven by necessity. It is driven by ideology. An ideology that believes that state must retreat, the market will magically include, and citizens must fend for themselves. Congress rejects this ideology clearly and unapologetically. What happens when insurance is fully privatized, sir? We do not need theory. We have experience. Look at the Prime Minister Fasal Bima Yojana. Farmers pay rising premiums. Claims are delayed or disputed. Insurers remain protected. Look at Ayushman Bharat. Private hospitals deny high-cost procedures. Cashless care becomes conditional. States report unpaid bills running into lakhs of crores. When profit enters into without accountability, risk quietly exits the insurer's balance sheet and enters the citizen's life, sir. That's what happens when insurance forgets its social role. Speaker, sir, this bill is does not just open the door to foreign capital. It stills the playing field itself. Private and foreign insurers will cherry-pick low-risk urban customers, exit rural and informal segments, reinsure profits abroad. And who will remain? LIC, public insurance. And as insurers of last resort, this was not competition. This is a systematic weakening. You privatize profits, you socialize losses. Congress will not accept this silent dismantling of India's largest, strongest public institution. Insurance is not a shop, sir. It is a financial backbone. Premiums are not spared change. They are long-term national savings. With 100% FDI, dividends flow out, reinsurance payments flow out, decision-making flows out. At a time when India needs domestic capital for infrastructure, climate resilience, and social protection, this bill allows an outflow of patient capital. That is not nation building, sir.
This is the financial dependency. Speaker, sir, we are not standing here to defend stagnation. Congress believes in reforms, but reform with responsibility. Our alternative is clear. Strengthen LIC and public insurance, expand coverage through public-private balance, not surrender. Use regulation to enforce inclusion. Treat insurance as a social infrastructure. We believe growth must be shared, not siphoned. Let me end where I began, sir. The bill asks a question. Will India say protection is a right or protection is a product? Will we say the state stands with citizens in the uncertainty, or citizens must negotiate risk alone? Speaker, sir, Congress chooses the republic over the market, citizens over corporations, protection over profit. And that's why we oppose this bill, not in anger, but in conviction, sir. Thank you so much, sir. Shri Koda Visheshwar Reddy. Thank you, Chairman, sir. Thank you for this opportunity to speak on this very, very important bill. Sir, if a misfortune strikes an individual and the entire society comes forward to help and support this, then it's indeed a truly great society, sir. And insurance is this business where if an individual faces misfortune, an accident or a death, then the society comes forward and help. It is indeed a great business, sir, and it's indeed a noble scheme. But, sir, it is unfortunate that despite it being needed by every country, especially the poor in our country, the insurance penetration has been dismal, sir. Sir, the opposition leaders talked about today earlier, blindly talked about during Nehru's time, they nationalized insurance companies. It did well. During Indira Gandhi's time, they nationalized insurance companies. It did well, sir. But they forgot to mention something, sir. Sir, the penetration of some of the insurance was as low as 1%, sir, when they nationalized it. Today, health insurance is almost 50%, sir. And it's not just for the rich. They'll say that, no, it's only for the rich. No, sir. Almost 40% of that goes to the poor with the government schemes like Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Pradhan Mantri Atal Pension Yojana, Ayushman Bharat, and the coverage is almost 40%. It goes down to the bottommost, sir. So is that good, sir? Absolutely. They talk about nationalization as being good, but that's when the penetration was the lowest. But strangely, sir, they forget to talk about P.V. Narasimha Rao ji. Why do they forget to talk about P.V. Narasimha, who actually privatized and turned the country around, sir, and that paved the way for privatization. And each year, when the privatization kept increasing from 24 to 49%, 49 to 74%, and now it's going to go to 100%. The penetration kept increasing, sir. The benefits of insurance is reaching the poor, sir. 33 crores are covered under Suraksha Bima Yojana, sir. Just 20 rupees for 2 lakh rupees premium if someone dies or accident. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is just about 36 rupees a month, sir, and it's a life insurance that they get about 2 lakhs at the end of this, sir. And this is going to the lowest and the lowest of the pyramid, sir. Sir, insurance penetration in India is still a long, long way to go, sir. And that is why the foreign investment is required. And foreign investment is not, it can be anybody, anywhere. It doesn't prevent the local. The local players actually being encouraged by reducing the paid-up capital amount, sir. So the insurance penetration will increase. It will create more jobs.
So when it went from 74%, from 49 to 74, 55,000 crores FDI income came into the country, and now it's expected when it goes to 1 lakh, when it goes to 100%, close to 1 lakh rupees FDI investment will come into the company. It will create direct jobs, sir, but more importantly, indirect jobs as well, sir. The agents will increase, but not only they'll increase, they'll be more profitable, sir. I think earlier this morning, Premachandran ji was very concerned about the agents, sir. Life insurance agent, LIC corporation agents. But this is a bonanza for the agents, sir. Before this bill, the agents were tied up with one insurance company. They were locked up. Those locks are unshackled, sir. If I'm a life insurance LIC agent, I can't sell some other product. If I'm some other Bajaj agent, I can't sell. I was locked up and chained up, sir. Now I'm unshackled. I can sell any insurance. I can take any agencies. I can sell health. I can take general. Their profitability increases and their numbers increases, sir. Today they are approximately 70 to 75 lakh insurance agents, sir. I'm very confident it'll grow almost double in the coming years with this, sir. But it's not only deeper penetration, sir, or the investment that it will bring in. There's one more, even more important thing, sir. Insurance promotes responsible behavior, and it penalizes irresponsible behavior. I'm not just talking about cigarette smoking or rash driving of cars, sir, or unhealthy lifestyle in many other ways. For example, sir, nowadays builders build buildings in unsafe areas, in lakes, and they get flooded. They build gated communities that get flooded, or sometimes even washed away when there's torrential rains. So in most developed countries, even if he's getting the permission illegally and he builds the building, the insurance company will not give the insurance, sir. If the insurance company does not give the insurance, the bankers will not give the loans, sir. And if the bankers don't give the loans, the product is unsaleable, sir. In a way, it also can check the corruption, sir. So it promotes responsible and right behavior and penalizes wrong behavior, sir. So there's a BPO in my constituency, sir. By the way, the IRDA also is in my constituency. That BPO just checks in United States whether any building is in a flood zone, in 100-year flood zone or 50-year flood zone and 25-year flood zone, and accordingly the insurance pays, sir. So insurance promotes responsible behavior in our society, sir. It's indeed noble, and the penetration should increase, and I don't think anyone should oppose the penetration of insurance, sir. Beside the number of agents, there are also so many other, like point of sales person, about 29 lakhs, sir. All of these will benefit. But more importantly, sir, anyone can't become an agent. They have to write an exam. And this exam is going to become tougher, sir, because before it was a separate exam for, let's say, life insurance, separate for health and separate for general. Now with the composite, they can sell any product. The exam may be difficult, but I'm sure all these agents will pass because India has brilliant people. But I request for rural penetration, this exam should be in every regional language. So it should be in Telugu, because in my villages, the insurance penetration is very low, sir. So just for example, sir, the GDP contribution of urban India is very high, 55 to 45. Population split is low. But if you look at the insurance offices, it's less than 2% in rural India, sir. So this, I think, we need to really look into it. The other good thing is composite insurance, sir. LIC could sell only life insurance. Now it can sell multiple other insurances. So they are not restricted. This is a very good thing. But even more, an insurance company cannot do any other operations except selling insurance. But now they can merge the financial services to the insurance, sir. So it is good, but also there's a risk. Because the foreign players can have an unfair advantage, sir. They can have an unfair advantage because they have deep pockets and unlimited funds, whereas our
players may not have the deep pockets, sir. So IRDA should be very careful if they merge a financial industry company with an insurance company, they'll have even more deeper products. And then there'll be a cap and restrictions and ratios that IRDA puts. They have to be scrutinized even more, sir. Otherwise, the bigger players will have a greater advantage and smaller players will not have that advantage. So composite license is good, and insurance, non-insurance business merging is good, provided IRDA truly acts like a watchdog, sir. But before I conclude, sir, 2 points about healthcare. The healthcare is very, very important, sir. So when it comes to healthcare, much is to be discussed. But if you look at the healthcare system in our country, it is called healthcare or hospitals, but actually it's a sick care industry, sir. They get compensated by the sick, not by the healthy. So on one side, you have a healthcare industry that compensated by the sick. On the other side, you have an insurance business which get compensated by wellness, sir. So two conflicting interests. Now, if these hospitals and healthcare industries are encouraged to get into the insurance business, then the healthcare business will truly turn from an illness business to a wellness business. They'll promote yoga, they'll promote gyms, they'll promote preventive health checkups, and most hospitals do not do that, sir. They depend on sickness, and I think that is very, very important, sir. But one more last, again, an important factor, sir. The most expensive insurance is healthcare, is the farmer's insurance, sir. If you take the premium to the claim, the farmer's insurance are the highest, and the cheapest is general insurance. Healthcare and farmer insurance are the most expensive. Sir, if you take any product or service in the country, if you take a car in India, a car in a developed country, it costs the same. If you take a ton of steel here, or a 3-star hotel or 5-star hotel in here and abroad, it's same, or maybe in India it's more expensive. Even if you take a ton of steel or a ton of aluminium or a ton of cement or a ton of wheat also, the price in India is comparable to the developed countries. So there's only one product or service which is cheaper in India, and cheaper by 5 or 10 times is healthcare, sir. Yet, it is unaffordable. So it's very, very important, sir. The penetration should increase more. And so one more thing, sir. I think my honorable member has just said that it's socialize. He mentioned socialize loss and privatize gains. Sir, it is now, sir. It's reaching the bottommost. The benefits are socialized. It is then, sir, Agriculture Insurance Corporation, I was there in the 16th Lok Sabha, sir. Agriculture Insurance Corporation, continuously loss-making. The methodology of giving that crop cutting, a very primitive and very low penetration, sir. So it actually was not insuring the farmers, it was insuring the banks that was giving loans to the farmer, and it was compulsory, sir. If I take a bank loan, I have to take, even if I don't like it, I have to take that, and the banks would cut the premium from my pocket, sir. But today, even if I'm not taking, the farmers are voluntarily, about 40 to 50% of the farmers were taking loans voluntarily. And it's not socialized, sir. They put a cap. Thank you. And, sir, before I conclude, I request the Finance Minister one last thing, sir. See, it's not just the funds, because insurance is a trust and knowledge business, sir. You build trust over ages or trust through advertisements, but knowledge is important, sir. It's not enough if I have a lot of funds, but I should have knowledge. Now, today, with artificial intelligence, actuarial sciences, the foreigners may have much more deeper knowledge about India than our Indian companies, sir. So it's very, very important to set up a very advanced actuarial science and research center, and this knowledge
should be public domain, so all insurance companies are on the same, so the foreign companies do not have an advantage in terms of knowledge of our business, sir. So thank you very much, sir. With this, the Pradhan Mantri's vision of insurance for all, Sabka Bima, Sabka Raksha, may happen even before 2047, sir. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you very much. Next speaker, Sri Utkarsh Verma ji. सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 ये एक धोखा, एक साजिश, एक कॉरपोरेट समर्पण है। माननीय सभापति महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की ओर से सबका बीमा सबकी सुरक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात है। सरकार ने नाम रखा है सबका बीमा, लेकिन इसकी आत्मा और दिशा साफ बताती है कि यह अडानी अंबानी और विदेशी कंपनियों का बीमा है। यह विधेयक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा पर सीधा हमला है। माननीय महोदय, अगर सच में यह विधेयक सबके लिए होता तो किसानों की फसल सुरक्षित होती, मजदूर की मजदूरी सुरक्षित होती, गरीब की ज़िंदगी सुरक्षित होती। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रीमियम आम आदमी देता है और मुनाफा कुछ चुनिंदा कंपनियां ले जाती हैं। 100% FDI भारत की बीमा व्यवस्था की नीलामी है। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक का सबसे खतरनाक प्रावधान है बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर 100% करना। इसका सीधा अर्थ है कि अब अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां बिना किसी भारतीय साझेदार के भारत की बीमा व्यवस्था पर कब्जा करेंगी। LIC, जिसने 1956 से गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग की सेवा की है, जिसका पैसा देश के नागरिकों के पसीने की कमाई से बना है, और अब उसे विदेशी कॉरपोरेट दिग्गजों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह वही नीति है जिसे अपनी मां को छोड़कर सौतेली मां को गले लगाना है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, देश की अर्थव्यवस्था देश के हाथों में रहनी चाहिए, लेकिन यह सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी हाथों में सौंपने पर आमदा है। उत्तर प्रदेश की भयावह सच्चाई, 95.8% लोग बीमा से बाहर हैं। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की हकीकत देखिए। यूपी में केवल 4.2% लोगों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। राष्ट्रीय औसत 55% है, यानी यूपी के 95.8% नागरिक असुरक्षित हैं। ग्रामीण यूपी में स्थित और भी बदतर है, सिर्फ 3% कवरेज है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध के गाँव में बीमारी आने पर लोग गाय भैंस बेचते हैं, ज़मीन गिरवी रखते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं। सरकार कहती है 2047 तक सबका बीमा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यूपी में बीमा कवरेज बढ़ा है क्या? सच यह है कि 1% भी ठोस सुधार नहीं हुआ। विदेशी कंपनियों को मुनाफा, यूपी के गरीबों को शून्य। माननीय सभापति महोदय, विदेशी बीमा कंपनियों का मॉडल स्पष्ट है। शहरी इलाकों में काम, महंगे प्रीमियम, मुनाफे वाले ग्राहक। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, बलिया, बहराइच, झांसी आदि जिले के मजदूरों का कौन बीमा देगा? LIC का सामाजिक दायित्व था ग्रामीण और कमजोर वर्ग तक बीमा पहुंचाना, लेकिन 100% FDI के बाद विदेशी कंपनियों को ना ग्रामीण यूपी से मतलब होगा, ना सामाजिक न्याय से। और जब LIC का केवल मुनाफे की दौड़ में धकेला जाएगा तो वह भी गांव से पीछे हटेगी। नतीजा, यूपी के 18 करोड़ ग्रामीण आबादी फिर से बीमा से बाहर होगी। प्रीमियम बढ़ेगा, दावा मिलना मुश्किल होगा। सभापति महोदय, सरकार कहती है कि कंपटीशन से रेट्स कम होंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले मार्केट कैप्चर करने के लिए थोड़ी छूट, फिर मोनोपोली और फिर प्रीमियम से बेतहाशा बढ़ोतरी। जो मध्यम वर्ग आज 5,000 से 10,000 प्रीमियम देता है, जो कल 20 से 30,000 देने पड़ेंगे। और क्लेम सर्टिफिकेट का क्या होगा?
विदेशी कॉल सेंटर, अंग्रेजी फॉर्म, तकनीक, झंझट, ग्रामीण और हिंदी भाषी नागरिकों के लिए ये एक डरावना सपना होगा। पीडीए के खिलाफ ये सीधा हमला है। माननीय सभापति महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं, सामाजिक न्याय का संकल्प दिया। यूपी में आज बीमा किसके पास है? अमीर 20% के पास, अमीर लोगों के पास, और जो गरीब है 40%, उसके पास लगभग शून्य है। ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम समाज में बीमा पेनिट्रेशन 2% से भी कम है। क्या विदेशी कंपनियां दलित बस्तियों में जाएंगी? अल्पसंख्यक मोहल्लों में कार्यालय खोलेंगी? छोटे किसानों को सस्ते प्लान देंगी? बिल्कुल नहीं। यह विधेयक पीडीए के खिलाफ सीधा हमला है, एलआईसी के साथ छलावा है। सरकार कहती है कि एलआईसी को ऑपरेशनल फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए, एलआईसी एक्ट 1956 में बदलाव, ऑटोनॉमी कम गवर्नमेंट कंट्रोल, फॉरेन कंपटीशन का दबाव, एलआईसी को जानबूझकर कमज़ोर कर विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। योगी सरकार का भी एक असफल रिकॉर्ड बताना चाहता हूं सभापति महोदय। यूपी में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन बीमा क्षेत्र में क्या हुआ? आयुष्मान भारत की कवरेज यूपी में सिर्फ 40%, राष्ट्रीय औसत 55%। जब मौजूदा योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पा रही, तो विदेशी कंपनियों के भरोसे गरीबों की सुरक्षा कैसे होगी? यह विधेयक समाजवाद की हत्या है। माननीय सभापति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सबसे पिछड़े व्यक्ति की सेवा ही सच्ची सेवा है। यह विधेयक उस विचारधारा की हत्या है। चौधरी चरण सिंह के ने किसान मजदूर प्रेम का अपमान है। यह काशीराम जी के सामाजिक न्याय आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश है। हमारी स्पष्ट मांग है कि 100% एफडीआई वापस लिया जाए, अधिकतम 49% रखा जाए, एलआईसी को मजबूत किया जाए, कमज़ोर नहीं। यूपी के लिए विशेष बीमा पैकेज समाप्त कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% अनिवार्य किया जाए, प्रीमियम पर सख्त नियंत्रण हो। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक सबका बीमा नहीं, सबका धोखा है। यह सुरक्षा नहीं, समर्पण है। हम समाजवादी हैं, पीडीए के सिपाही हैं, हम आर्थिक न्याय के प्रहरी हैं। हम इस गरीब विरोधी, यूपी विरोधी, कॉर्पोरेट परस्त विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती शताब्दी रॉय जी। सर, ये बिल का नाम है सबका बीमा सबका सुरक्षा। जैसे आप लोगों का नारा है सबके साथ सबका विकास। ये जानना, ये सब होते कौन है, कौन सा धर्म का, कौन सा जात का, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कौन लोगों को आप सबके ब्रैकेट में डालते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। Trinamool Congress stand has always been clear when it comes to FDI in insurance. We strongly oppose it. On March 2015, when the Insurance Law Amendment Bill was being discussed, we had said this allowing of FDI in the insurance sector is something that is against the interest of the country. This whole logic of the government is pressing ahead with FDI in insurance sector in fraught with dangerous consequences. Now this bill seeks to allow 100% FDI in insurance. 74% इंश्योरेंस के टाइम भी देश में ऐसा कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ 4 कंपनीज को 74% दिए थे FDI, अभी वो 100%। इसका मतलब क्या है? आप 100% देके क्या साबित करना चाहते हो? देशभक्त, देश प्रेमी? India has an overall insurance penetration rate of 3.7%, below the global average of 7%. The requirement of net owned funds includes equality capital, free reserve balance in share premium account, and capital reserve representing surplus. For foreign insurance is proposed to be reduced from rupees 5,000 crore to rupees 1,000 crore. मतलब इसमें भी देशभक्त का, देश प्रेमी का ही प्रकट हो रहा है, क्योंकि आप 5,000 से 1,000 करोड़ में उतार के आगे उनको लाने के लिए। But you have not accepted the proposal to lower minimum capital requirements for new insurance. Currently, the law mandates a minimum paid-up capital of rupees 100 crores for insurance and rupees
200 crore for reinsurance. Therefore, that have long been criticized as being too high and prohibited. मतलब आप देश के लिए 200 से 100 नहीं कर रहे हैं और फॉरेन के लिए आप 5000 से 1000 कर रहे हो. देश प्रेमी का ही प्रूव है ये. One of the most notable assumptions in the bill in the absence of provisions for composite license, a reform that many insurers had strongly asked for. Under the exciting Insurance Act 1938, insurers are confined to rigid sides. Life insurance can only offer life policies, and general insurance cannot enter life insurance segment. You are introducing foreign investment in insurance. Remember, insurance giant American International Group, AIG, they are considered too big to fail. But during the 2008 financial crisis, they had to be bailed out by the government, an amount of over 180 billion US dollars and taxpayer money. So beware, just bringing in foreign companies is not a miracle cure which will grow the sector. While on the topic of health insurance, let's compare Shastro Sathi with Ayushman Bharat. Ayushman Bharat started 2 years after Shastro Sathi. You copied the idea. Very good. Shastro Sathi is in the name of the woman head of family, woman empowerment, just like we have 38% of women MPs in parliament. Parents of both spouses are included under Shastro Sathi. Ayushman Bharat, you have need to make a card. Shastro Sathi in completely paperless and cashless. Shastro Sathi over 2.4 crore families, more than 2,800 hospitals empaneled. Over 1 crore hospitalization till now, with 99% claims settled. Ayushman Bharat scam, a CAG report found that 7.5 lakh beneficiaries were linked to a single mobile number. A recent survey conducted in over 300 districts revealed that over the last 3 years, 43% people surveyed faced problems while claiming their medical insurance. ये medical इंश्योरेंस जब करने के लिए लोग आते हैं, जो समझाते हैं, बोलते पढ़ के लो, लेकिन टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं बहुत लोग वो समझ नहीं पाते, वो साइन करते, लेकिन एक दुकानदार जैसा जब खरीदने के लिए जाते हैं वो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन जब वापस देने के लिए या चेंज करने के लिए जाते हैं एक्सचेंज के लिए, तब दुकानदार पहचान नहीं पाते. ऐसा भी अगर इंश्योरेंस के टाइम इतना रूल्स दिखाते, जब क्लेम करते हैं तब आप हॉस्पिटल में क्लियरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, सब तरह हॉस्पिटल्स रेडी टू डिस्चार्ज पेशेंट. जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते, एक तो 10 दिन 7 दिन रहने के बाद घर जाने के तरसते, तब आप क्लियरेंस देते नहीं है, इंश्योरेंस के पास जाना पड़ता है. ऐसा भी होता है एक दिन रुक जाना पड़ता है. एक दिन मीन्स वो पैसा लोगों खुद से देना पड़ता है. एक्चुअली इनसे इस गरीब देश में ऐसे भी हॉस्पिटलाइज होने से इतना पैसा खर्च होता है, जो जिंदा बचकर तो आ जाते हैं लेकिन फाइनेंशियली मर के आ जाते हैं. तो इसी जगह पे अगर इंश्योरेंस भी इस रूम के लिए पैसा नहीं देंगे, इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं देंगे, इस टेस्ट के लिए नहीं देंगे, बहुत सारे वो कट करते हैं जिसमें मिलने का टाइम लोगों को एक्चुअली नहीं मिलते. It is happening despite the hospital TPA or account desk collection pre-approval from the insurance company before admitting the patient. So-called cashless treatment has turned into senseless, waiting the numerous patients. Another major issues in inadequate disclosure by the insurance companies about policy specific details. Technical complex words are used to mislead policyholders. There are lots of rejection based on pre-exciting disease. Health Minister should direct IRDAI to make it mandatory for insurance companies to disclose on their websites each month the number of claims received and rejected. कितना
रिजेक्ट करते ये जानना भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो दूसरे को पता चलेगा जो हम लोग पैसा दे रहे इंश्योरेंस कर रहे, क्योंकि इंश्योरेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मिलने का टाइम क्या मिल रहे, कितना मिल रहे, किसको मिल रहे, किसको नहीं मिल रहे, कितने लोगों को नहीं मिल रहे, इसलिए ये वेबसाइट में देना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार बोल रहे विदेशी कंपनी को ये उनके लिए टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो लेके आएंगे। अभी भी बीजेपी के एमपी भी वही बोल रहे हैं। सच तो अगर ऐसा है, ये अगर इसी सेक्टर में है, बहुत सारे सेक्टर में है जो देश से ज़्यादा कोई डेवलप कंट्री में उसका टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो क्या करेंगे? सबको लेके आएंगे? देश का जितना कंपनीज है उसको डेवलप करो, उसको चांस दो। आप ये पॉलिसी जो होते हैं ना, इस पॉलिसी में आप लोग क्या करते हो, सिर्फ जो पब्लिक जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट में नहीं खड़े होते। आप जो कंपनीज है उसके लिए होते, लेकिन सरकार होते देश के लोगों के लिए, जो गरीब है, जो वोट देके आपको जिता के लाते हैं। ये कंपनीज के लिए आप काम जितना करते हो वो अगर लोगों के लिए करेंगे तो मुझे लगता है देश आगे भी जाएंगे। आप अगर अभी रिजू जी ने आज टेबल थपथपा के बोले हैं हम लोग बिल तो पास करते ही रहेंगे, करेंगे भी, इतना एरोगेंसी के साथ बोले और बोलेंगे आप डिस्कस करो लेकिन हम लोग प्रेरित करके रहेंगे। तो ये भी एक देशभक्त की साइन है, क्योंकि आप जो भी करना चाहे करेंगे। ऑपोजिशन जो भी बोले, जो भी अपोज करे, आप डेमोक्रेसी खत्म करेंगे, फिर भी आप देशभक्त है। आप महात्मा गांधी का नाम उठा देंगे, फिर भी आप देशभक्त है। हम लोग अपोज करेंगे तो हम लोग देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। तो आप देशभक्त के लिए, देश प्रेम के लिए बोले, देश के लिए सोचे, देश के इंश्योरेंस कंपनीज को चांस दे उनको डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट जो है उनके साथ बात करें, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग ये अपोज कर रहे, हम लोग भी इसको अपोज कर रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज श्री GM हरीश बालायोगी जी। Thank you, sir, for allowing me to the opportunity to speak on the Sabka Bima Sabka Raksha Bill 2025. This bill is a timely and necessary step to modernize India's insurance framework. Allowing up to 100% foreign direct investment will help expand the sector and improve consumer choice, while the strengthening role of IRDAI will enhance regulatory oversight and protect the policyholders. The creation of Policyholders Education and Protection Fund reinforces these reforms by recognizing that insurance can expand meaningfully only when awareness and trust are built among the consumers. Speaker, sir, one provision that particularly deserves appreciation is the removal of the mandatory minimum paid-up capital requirement for the insurance cooperative societies. This will encourage community-based and region-specific insurance models, which are crucial for expanding coverage in undeserved areas. However, I would like to highlight certain concerns where the intent of the bill can be further strengthened. Firstly, insurance penetration in India's rural remains deeply inadequate. India's insurance penetration is only about 3.7%, well below the global average of 7%. While easing capital norms for cooperative insurers is a step in the right direction, the reality is that India currently has only around very few cooperative insurance. Therefore, microinsurance assumes critical importance for low-income households, which provides protection against the health emergencies, crop loss, natural disasters, and loss of earning members. To scale microinsurance meaningfully, it is essential to encourage smaller and niche players who understand local risk and regional needs. Therefore, rather than a rigid capital threshold, empowering IRDAI to prescribe proportionate and risk-based capital norms
would allow flexibility while maintaining prudential safeguards. Secondly, sir, while opening the sector to 100% FDI will increase competition and consumer choice, it is equally important to ensure leveling playing field between the public sector and the private insurer. At present, a TDS of 2% applies only to public sector insurance companies, while private insurance are exempt. This regulatory asymmetric places public sector insurance at a competitive disadvantage. Therefore, to realize the objective of the bill, such unequal tax treatment must be addressed. Speaker, sir, as more insurance enter the market, the absence of composite licensing remains a structural limitation. At present, insurers are required to operate separate entities for life, general and health insurance, which increases compliance cost and prevents the offering of integrated products. Allowing composite licensing would therefore enable insurers to offer bundle solution covering life, health and savings under one roof, improving efficiency and delivering greater value to consumers. Speaker, sir, the gaps in the insurance coverage becomes most visible when disaster strikes and livelihoods are wiped out overnight. India faces severe and recurring disaster risks due to its geographic and demography. In my own state of Andhra Pradesh, particularly in coastal districts such as Dr. B.R. Ambedkar Konaseema, communities face floods and cyclone almost every year. Despite this repeated exposure, disaster insurance coverage in India remains weak, particularly for economically vulnerable households and infrastructure high-risk areas, which more than 90% natural disasters are being uninsured. The Finance Committee recommended parametric insurance as a solution, offering a faster payouts and clear triggers. I'm happy to note that the NDMA has constituted a working group to develop single parametric insurance products for India. Additionally, I would suggest the Honourable Minister to use provisions in the registration to speed up implementations of parametric insurance and also open up use of government technology such as WINDS, Weather Information Network and Data Systems for the same. Speaker, sir, similar gaps in insurance protection exist for migrant workers working abroad. The insurance government offers the Pravasi Bharatiya Bima Yojana as a mandatory insurance scheme for all Indian workers holding ECR category passports going to ECR countries. However, the Committee on the External Affairs noted that since the inception of the scheme, only about 2,197 claims have been settled out of the 80 lakh policies, and only 156 of 418 claims were settled. This low settlement ratio indicates deeply concerning to systematic shortcomings. Coming from a state with a high number of migrant workers to other countries, especially the Gulf region, I would recommend the Ministry of Finance work with the Indian missions in claim facilitation, stricter oversight of insurers, and timely reimbursement to protect vulnerable migrant workers. Speaker, sir, as I conclude, I would like to take a moment to commend on the Delhi police for the cracking an insurance scam caller earlier today, involving a fake call center that preyed on individuals whose policies were nearing maturity. While we celebrate their work, we must be equally vigilant of dangers possessed by scamsters and fraudsters in the insurance sector. We must ensure that all steps have been taken to provide the government with adequate support for modern technology so that they may protect our people from such frauds. Now, With this, I conclude on behalf of my party, we support the bill, sir. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Sri Rajbhav Prakash Wajiji.
Honorable Speaker, sir, I stand here to speak on the Lok Sabha Sabka Bima Sabki Raksha Amendment of Insurance Laws Bill 2025. While the government claims that this bill will accelerate growth, improve policyholder protection, and enhance ease of doing business, a careful reading reveals serious concerns relating to foreign control, excessive regulatory powers, and the privacy of our citizens. Honorable Speaker, sir, the most troubling provision is the proposal to allow 100% foreign investment in Indian insurance companies. Insurance is not just another business. It is a long-term financial backbone that supports infrastructure, social security, and household stability. By permitting complete foreign control, we risk prioritizing overseas shareholders' interest over the long-term financial security of Indian policyholders. I asked the government, how does handing over full ownership of our insurance sector to foreign entities ensure Raksha for our citizens? Honorable Speaker, sir, my second concern relates to data privacy. The bill mandates extensive collection and centralization of sensitive personal data, including Aadhaar and PAN details of policyholders, and requires insurers to submit this data in real time to the regulator or its authorized entities. In such era of rising cyber threats, creating such large centralized databases, especially when insurers may be 100% foreign owned, poses a serious risk to the privacy and security of millions of Indians. The assurance of confidentiality in the bill are weak and insufficient. In conclusion, Honorable Speaker, sir, this bill risks replacing legislative scrutiny with regulatory convenience and national control with complete foreign ownership. Reforms are necessary, but they must be balanced, transparent, and protective of citizens' rights. I strongly urge the government to refer this bill to the Select Committee so that the implications of 100% FDI, excessive delegation of powers, and data privacy risk may come thoroughly examined. Only then can we ensure that Sabka Bima truly provides Sabki Raksha. Thank you, Honorable Speaker. Thank you very much. Next speaker, Sri Bhaskar Barge. अध्यक्ष महोदय, आपण आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावरती चर्चा करत आहोत. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारने 2047 पर्यंत सर्वांना विमा देण्याचं मोठं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. माझ्या पक्षाची भूमिका लोकांच्या हिताची, पर्यावरणपूरक आणि सुधारणावादी राहिलेली आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्रात 100% विदेशी गुंतवणूक करण्याला किंवा तंत्रज्ञान आणण्याला विरोध नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गुंतवणुकीचा नाही, तर त्यातून सर्वसामान्य जनतेला किती आणि कसं संरक्षण मिळेल, त्याचा त्यांच्या आयुष्यावर कोणता सकारात्मक परिणाम होईल हा आहे. मी सभागृहाचं लक्ष 3 गंभीर मुद्द्यांकडे आणि आकडेवारीकडे वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सरकार म्हणतं की खाजगी आणि विदेशी कंपन्या आल्यावर शेतकऱ्यांना फायदा होईल, पण प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्यांनी प्रीमियम म्हणून गोळा केलेली रक्कम आणि दाव्यापोटी वाटलेली रक्कम यात मोठी तफावत आहे. हवं तर सरकार आपल्याकडील आकडेवारी तपासून पाहू शकतं. या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या दुःखावर हजारो कोटीचा नफा कमवला. वास्तव तुम्ही नाकारू शकणार नाही. सध्याची स्थिती अशी आहे की शेतकऱ्यांचा क्लेम मंजूर व्हायला 6-6 महिने लागतात. महाराष्ट्रामध्ये बीड मॉडेल यशस्वी झाले होते, जिथे कंपन्यांच्या नफ्यावर मर्यादा होती. जर नुकसान कमी झालं तर उरलेली रक्कम शेतकऱ्यांना आणि सरकारला परत मिळत होती. नवीन विधेयकामध्ये विदेशी कंपन्यांना पायघड्या घालताना संपूर्ण देशामध्ये बीड मॉडेल लागू करून त्यांच्या नफ्यावरती मर्यादा घालण्याची हिम्मत सरकार दाखवणार का? दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेमध्ये अमेरिकेसारखा देश ओबामा केअरच्या दिशेने जात आहे. जग त्या दिशेने जात आहे. मग आपण का जात नाही हा प्रश्न या ठिकाणी पडतो. अध्यक्ष महोदय, सबका विमा म्हणणं सोपं आहे, पण नीती आयोगाच्या अहवालानुसार आजही भारताच्या आरोग्यावर होणारा एकूण खर्चापैकी जवळजवळ 48 ते 50% खर्च लोकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. जगाच्या पाठीवर हे प्रमाण खूप जास्त आहे. जगामध्ये सरासरी 18% खर्च होतो आणि हे प्रमाण भारतामध्ये खूप जास्त आहे असं मला वाटतं. आयुष्यमान भारत योजना आहे, पण वास्तव काय? अनेक खाजगी रुग्णालय
पॅकेजचे दर परवडत नाही म्हणून उपचार नाकारतात. महाराष्ट्रात तर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची कोट्यावधी रुपयाची बिलं थकल्यामुळे रुग्णालय सेवा देत नाही. विदेशी कंपन्या आल्यानंतर त्या फक्त श्रीमंत शहरामध्ये हॉस्पिटलला टाईप करतील. खेड्यातल्या गरिबाला विमा असून उपचार मिळणार आहे का याची गॅरंटी विधेयकामध्ये हवी. महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य विम्याचे कवच आहे म्हणून ज्या अनावश्यक सेवा या रुग्णांच्या माथी मारल्या जातात, त्याचे आवाचे सव्वा बिलं फाडले जातात, त्या गैरप्रकारावर देखील अंकुश कशा पद्धतीने ठेवता येईल याकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एकीकडे सरकार म्हणतं विमा घ्या, सुरक्षित राहा, आणि दुसरीकडे त्याच विम्यावरती 18% GST आकारला जातो. म्हणजे विमा घ्यायचा असेल, सुरक्षित राहायचं असेल तर तुम्हाला अगोदर GST भरावा लागेल. अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या 3 वर्षामध्ये केवळ आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरचा GSTमधून सरकारने जवळजवळ सुमारे 24,000 कोटी रुपयाहून अधिक कमाई केली आहे. मग मला सांगा, आरोग्य आणि जीवन ही काही लक्झरी आहे का की ज्यावर 18% टॅक्स लावला जातो? संकटात असलेल्या माणसाकडून टॅक्स वसूल करणं हे कोणत्या कल्याणकारी राज्याचं लक्षण आहे? म्हणून अध्यक्ष महोदय, शासनाने सर्वांसाठी विमा ठेवताना सगळ्यात अगोदर विम्यावरील GST हटवला पाहिजे. विशेषतः आरोग्य विमा आणि टर्म इन्शुरन्सवरील 18% GST रद्द